Hi everybody, hi students, how are you all? I hope that everyone is great. Okay, today's class is about a topic of grade 9 biology, and that is tissues. Okay, a very interesting topic, a very interesting topic. So today we're going to start with the grade 9 biology tissues chapter. Before this chapter, I have also, made a video of grade 9 biology on cell topic. Okay, must watch that if you want to. Okay, today we're gonna be doing tissues. Okay, and especially today we're gonna be covering up animal tissues. Okay, in one shot, we're gonna be covering up the animal tissues in one shot. So yeah, before beginning, yeah, in my last video, I gave a homework question, not a. I gave three homework questions, and I got answer from many people. First, I got answer from Manpreet Kaur, and the answer is correct. Then I got answer from Farhan Khan, and that's also correct. Academy science and astronomy is my passion. Lana Emma and Nazima Qureshi. Okay, I got the correct answers from 1, 2, 3, 4, 5, 6. From these 6 people, I got the correct answer for the homework question. Very good, everyone, for the right answer. And yes, the homework question was, what is a blind spot? Where are the rods and the cone cells found? How are the messages transferred from the eyes to the brain? है ना? Very simple. So answer क्या है? Blind spot क्या होता है? It is a spot in your eye. Yeah, blind spot. It is an area on the retina where the optic nerve it leaves the retina. It leaves the eye. The point where nothing can be seen. यहाँ पे light rays पड़ते भी हैं तो उसका कोई यूज नहीं होता because यहाँ पे कोई भी image form नहीं होती है. It's not sensitive to light. Right, and next question was ki where are rod and cone cells found? Very simple. Rod and cone cells are found on the retina. Okay, then how a message is from the eyes transferred to the brain? It is transferred in the form of electric impulses. It is transferred in from eyes to brain through electric impulses. Okay, very good. The 6 people who give the correct answer. If you also want your name to come on my screen, then you have to answer the homework question that I give in my every video. Okay, yeah. So today we're gonna cover the animal tissue in one shot. Okay, so what is a tissue first of all? है ना? Tissue क्या होता है? Any idea? Anyone? कि टिश्यू क्या होता है? या ओके, सो टिश्यू बेसिकली जब टू और मोर जो सेल्स हैं वो कंबाइन होते हैं ना, व्हेन टू और मोर दे सेल्स दे कंबाइन, दे फॉर्म ए लेयर. ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे सेल्स में कंबाइन करके लेयर बना दी, मैं उसको टिश्यू कहूंगी. आई विल से दैट पर्टिकुलरली एज ए टिश्यू. So, when two or more cells combine, they make tissues. Okay. Next, these tissues perform some specific function. हर एक टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. लाइक जो मेरा नर्वस टिश्यू है वो एक अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, whereas मेरा मस्कुलर टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा. And there are two types of tissues: animal tissues and plant tissues. In this video, we're going to be covering the animal tissues. Okay, everyone? Right. So, animal tissue क्या होता है? As the name suggests, tissues जो animals में या humans में होते हैं. Right? The tissues that are present in animals are known as animal tissues. सबसे simple definition. अब there are 4 major types of the animal tissue. अब जो आपका ये एनिमल टिश्यू है ना, इसके 4 मेजर टाइप्स होते हैं: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue.
There are four major types of animal tissues. They are epithelial, muscular, connective, and nervous tissue. Let's begin with the epithelial tissue first. So epithelial tissue क्या होता है? अब देखो epithelial मतलब जो first layer होती है, ठीक है? epithelial tissue ना आपकी inner linings form करता है, किसी भी organ की inner linings form करता है कौन? epithelial tissue. Like हमारे जो mouth की inner lining होती है, it's formed by the squamous epithelial tissue, right? The skin, it is made up of stratified epithelial tissue. The inner linings of the kidney tubules, it's made up of cuboidal epithelial tissue. Okay, so the main function of the epithelial tissue is from the inner linings of most of the organs. Okay, so this type of tissue forms the inner lining of most of the organs. Its main function is protection. Not all, but some perform the function of protection, some perform the function of filtration, some perform absorption. सब अलग अलग होता है. It's a very thin layer so that gases can easily pass through them. Not all, but usually epithelial tissue, they are single layered. Location. Usually जब epithelial tissues होते हैं, where are they found? They are found in the alveoli of the lungs, inner lining of the blood vessels, inner lining of the stomach. Okay, stomach is spelling here, it is wrong. Inner lining of kidney tubules, skin, windpipe, या फिर trachea. So major location of the epithelial tissue, ठीक है? अब बात करते हैं डिटेल में. What are the types of the epithelial tissue? 5 types of epithelial tissue there are in your syllabus. Simple squamous epithelial tissue, stratified squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue. 5 major types of the epithelial tissue are simple squamous, stratified squamous, columnar epithelial, ciliated epithelial, cuboidal epithelial tissue. Okay, so these so this is your image. Basically this is your cuboidal. Cuboidal, as the name suggests, cube ho gaya, right? It's in cubicle in shape. Just so you can see this, right? It's cubicle, है ना? So simple cuboidal, simple squamous. अब देखो squamous की क्या property होती है? Squamous, this squamous tissue, it does not have any fixed shape. It is irregular. किसी भी shape में होता है. Simple columnar. ठीक है, column वाले. The long, tall one, which look like columns, they are the simple columnar. Stratified squamous. Squamous तो simple ऐसे irregular shape थी. आपने बहुत सारे simple squamous को एक के ऊपर एक compile कर दिया. It became stratified squamous. Let's read in detail. अब जो squamous epithelial है, उसके 2 types होते हैं. Simple squamous, stratified squamous. ठीक है, simple squamous में क्या होता है? As the name suggests, एक simple layer होती है. Stratified में क्या होता है? एक बहुत सारी layers होती हैं. Simple squamous epithelial tissue, simple squamous epithelial tissue, it is a very thin tissue which forms the inner lining of almost every organ. It is so thin that the gases can pass through. So अब देखो, अब मैं lung की बात करूं, जो हमारा lung का जो alveoli होता है, alveoli, they are the air bags. Okay, air के जो bags होते हैं हमारे lungs में, alveoli. So whenever you inhale any air, they they inflate. So now alveoli of the lungs and alveoli of the blood vessel की बात करें या lungs की बात करें, उनकी जो lining होती है, it is made up of the simple squamous epithelial. Why? Because simple squamous इतना thin है so that gases can pass. And lungs में क्या function है? Gases का इधर उधर. अगर ये stratified होता, oxygen and other gases कैसे pass हो सकते? नहीं हो पा रहे, right? So we need a simple layer जिससे gases pass हो सके. Inner lining of the mouth, inner lining of the blood vessel, inner lining of the lung alveoli. Its main function is protection.
ठीक है, किसका? सिंपल स्क्वामस का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन. Then you have the stratified squamous epithelial. It is that simple squamous epithelial which has stacked upon many layers and now is stratified squamous. Most common example हमारी skin. ठीक है, देखो ये आपका epithelial tissue की एक layer है, उसके ऊपर आपने और epithelial stack कर दिए and it formed the stratified. And a thing that you must know, only epithelial tissue, सिर्फ epithelial tissue की basement membrane होती है. Only epithelial tissue have their basement membrane. Let's quickly move towards the cuboidal epithelial. It is a cuboidal in shape and usually performs the function of filtration. ठीक है? It is found in kidney tubules and it filters the blood. So जो आपका cuboidal epithelial tissue है, जो मैंने आपको बताया था, it is वो cube shape में होता है. It performs the function of filtration. इसका major function होता है filtration करना, right? The major function is filtration. जो भी आपका blood kidneys में जाता है, impurified blood जो भी आपका kidneys में जाता है, that all वो जो भी आपका ब्लड होता है, ये क्या होता है? फिल्टर होता है. कैसे? आपके क्यूबॉइडल टिश्यू से, राइट? सो जो भी आपका क्यूबॉइडल टिश्यू है एपिथेलियल, इसका मेन क्या फंक्शन है? फिल्टरेशन. ठीक है, सो जो भी आपका इम्प्यूरिफाइड ब्लड जाता है, इट गेट्स प्यूरिफाइड, है ना? कैसे होता है? थ्रू एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. बी वेरी स्पेसिफिक. अब बात आती है कॉलमनार एपिथेलियल में. Columnar, as the name suggests, column वाले, लंबे लंबे pillars वाले. It's a column-like structure which is tall and usually does the function of absorption and secretion. Its main function is absorption, absorb करना, and secretion. जो भी it's usually found in small intestine. अब small intestine में क्या होता है? वहां पे एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होना चाहिए, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, एंड नाउ डाइजेस्टेड फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड इन होल योर बॉडी. नाउ हु डज द फंक्शन ऑफ absorbing and then transporting? The columnar epithelial tissue. It's found in small intestine and performs a function of absorption. Clear till here? Last, ciliated epithelial. Ciliated. Cilia क्या होता है? विलाय देखा है आपने? See, columnar tissue, when they have substance called cilia on them, जब भी उनके cilia होता है. अब cilia क्या होता है? Cilia ना एक hair-like structure है. Like for example, this is my columnar, and I have some thread-like or some hair-like structure like this on the columnar. Okay, this is called cilia. Its main function is filtration. Okay, cilia on them, they are called ciliated tissues. They play a very important role in purification. Like they are present in a windpipe, they filter the air that passes. अब देखो क्या होता है, ये ciliated epithelial जो है ना, ये hair-like structure जो होता है, हमारे windpipe में होता है ये. It's present in our windpipe. And why in our windpipe? You know, we inhale air, and that air may contain many dust particles that we even don't know. Now, when that, unpurified air, it passes through our trachea, what happens is that our trachea, the windpipe, is so powerful, it is so good that it filters the air. Now, how? Because it has cilia on them. Or jo bhi dust particle hai, it gets stick on that cilia, right? And it continuously move hota rehta hai. Kya? Cilia, okay? Now we are done with the epithelial tissue. Okay, now let us move towards the muscular tissue. A muscular tissue क्या होता है? Muscular tissue, as the name suggests, muscles में होता है हमारी. The muscular tissue are the tissue that are specially found in our muscles. जो tissue हमारी muscles में found होता है, हम उसको muscular tissue कहते हैं. Like they are present in the organs like heart, attached to the bones, skeletal muscles, lungs, in our stomach, etc.
ठीक है, नाउ आपको पता चल गया मस्कुलर टिश्यू कौन सा है? Tissue that's present in your muscles, like they make most of the organs, like your heart, your lungs. They're attached to your bones, which help in the movement, right? The heart. Types of muscular tissue की बात करें तो there are three major types of muscular tissue: striated, smooth, and cardiac. Three major types of the muscular tissue: striated muscular tissue, ठीक है, जिनमें striations होती हैं, ये वाला, ठीक है, इनमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं ना, इसको हम स्ट्रिएशन कहते हैं। एंड आइदर आप उसको स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बोन से अटैच्ड होते हैं। दे आर अटैच्ड टू आवर बोन्स, दैट इज व्हाई वी आल्सो से देम स्केलेटल मसल। किसको? स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू को आप स्केलेटल भी कहते हो, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू आवर बोन्स एंड दे आर वॉलंटरी। मैं अपना हैंड अपनी मर्जी से मूव कर सकती हूँ, राइट? स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल दोनों इनवॉलंटरी होती है, मतलब दे आर नॉट इन योर कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली बाय योर बॉडी। लाइक स्मूथ मसल्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गन्स लाइक लंग्स। अब जो आपके लंग में रेस्पिरेशन में जो आपका प्रोसेस चल रहा है, रेस्पिरेशन, अब आप तो उसको होल्ड नहीं कर सकते हो ना, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन, तो इट्स इनवॉलंटरी। एंड कौन करता है ये? स्मूथ मसल्स। कौन करता है? स्मूथ मसल। Then you have the cardiac muscles involuntary, because they are only present in your heart. ठीक है, cardiac muscles only present in your heart, they are branched, ऐसे branched होते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं striated muscular tissue की। This type of tissue is voluntary, आप इसको मूव कर सकते हो। It is always in our control. We can move our hands, legs any way we want, है ना? I can move my hands, I can move my legs any way I want to. This type of tissue is attached to our bones and helps in the movement. हमारी बोन से attached होता है and तभी हम इनको skeletal कहते हैं, right? It helps, it is attached to our bones and it helps in movement. That is why हम इसको skeletal muscle भी कहते हैं. Then as they help in body movement, उनमें light और dark bands होते हैं, ठीक है? ठीक है, अब मूवमेंट करने के लिए ना आपको बैंड्स चाहिए होते हैं, स्ट्रिएशंस। देखो अब इनमें ये कहीं लाइट हो रहा है, कहीं डार्क हो रहा है, कहीं लाइट हो रहा है, इनको हम स्ट्रिएशन कहते हैं, इनको हम स्ट्रिएशंस कहते हैं। स्ट्रिएशंस मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है? स्ट्रिएशंस जो हैं वो आपकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हाउ? लाइक आपने स्प्रिंग नोटिस करा होगा, स्प्रिंग इज समथिंग लाइक दिस, राइट? स्प्रिंग को यू कैन स्ट्रेच, इसमें जो ये मूव्स होते हैं, जो ये कर्व्स होते हैं, यही हेल्प करते हैं ना इसकी इलास्टिसिटी को। वैसे ही हमारी जो स्केलेटल मसल है उसकी इलास्टिसिटी में कौन हेल्प करता है? स्ट्रिएशंस, लाइट और डार्क बैंड्स। क्लियर? ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं यूजुअली। देखो मल्टी न्यूक्लिएट में बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, ये देखो, राइट? एंड और ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। Clear till here? Striated muscles, striated नाम से ही समझ लो, इनमें लाइक डार्क बैंड्स होते हैं एंड हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये बोन से अटैच्ड होते हैं, तो हम इनको स्केलेटल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल। अब देखो स्मूथ मसल, दे आर इनवॉलंटरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती मेरी लंग्स में क्या हो रहा है। आई कैन नॉट कंट्रोल माई ब्रेथ, आई कैन नॉट, राइट? आई कैन नॉट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ माई किडनीज, आई कैन नॉट कंट्रोल देम, राइट? सो दे आर इनवॉलंटरी, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल. It's usually found in every muscular organ of a body like lung, liver, kidney, etc. They're spindle in shape. ये spindle shape में होते हैं. Spindle मतलब something like so. इनकी pointed edges होती हैं. इनकी pointed edges होती हैं. ये spindle shape में होते हैं और multinucleate होते हैं. You can see ना इतना सारा nucleus है. यहाँ भी nucleus है ना? They are not striated. इनमें bands नहीं होते. क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते. जो भी मसल्स हमारी कंट्रोल में हैं वो striated होती हैं. The muscles that are in our control are striated, right? But the smooth muscles, they are not in our control. They are involuntary. That is why they do not have any striations. Next, cardiac muscles, my favorite.
So the cardiac muscles are the muscles that are involuntary. Obviously you cannot control the movement of your heart, है ना? आप अपने हाथ की movement को control नहीं कर सकते हो. We cannot control the beating of our heart. They are only and only found in the heart. तभी हमने इनका नाम रखा है cardiac muscles. As the heart beats continuously, there are striations. अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी movement होती है heart में, heart आपको पता है ना 24/7 move करता है. 24/7 move नहीं, I mean beat करता है. Your heart beats 24/7. Right? आपका heart 24/7 beat करता है. अब इतना move करता है, इतना beat करता है, obviously striations चाहिए ना, तो कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड होती हैं. टिश्यू जो है वो ब्रांच्ड होते हैं. देखो आप ये ब्रांच जैसे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ट्री की ब्रांचेस है. सो द टिश्यू दे आर ब्रांच्ड एंड दे यूनिन्यूक्लिएट. सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है. You'll rarely see any nucleus. They are uninucleate. Okay, so this was a muscular tissue. I hope muscular tissue वाला टॉपिक क्लियर है आपको, right? अब बात आती है नर्वस टिश्यू की. नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो है ना, जस्ट अ मिनट, नर्वस टिश्यू, इट इज द टिश्यू, इट्स फंक्शन है ना उसका है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. नर्वस टिश्यू का फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट? आपकी पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, ये सारे सिग्नल्स आपके ब्रेन को जाते हैं. हाउ? ड्यू टू द नर्वस टिश्यू. द नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन. ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, एक नर्व सेल को आप न्यूरॉन कहते हो. देखो, सी दिस इज योर न्यूरॉन, या इसका नर्वस टिश्यू भी कह सकते हो इफ यू हैव मोर हियर. सो देखो यहाँ पे होता क्या है. दिस इज योर सेल बॉडी या फिर सोमा. दीज आर योर डेंड्राइड्स. दिस होल पोर्शन इज योर एक्सॉन एंड दीज आर योर नर्व एंडिंग्स. डिटेल में पढ़ते हैं. अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. देखो, जहां पे न्यूक्लियस देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस वाला एरिया, इसको आप सेल बॉडी कहते हो. यहाँ पे इसको सोमा भी कहते हो. ओके, SOMA, साइटोन भी कहते हो. यू हैव अ लॉट मेनी नेम्स. सेल बॉडी, ये जहां आपका न्यूक्लियस है वो आपकी सेल बॉडी है. देन आप यहाँ पे कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिसका आप डेंड्राइड्स कहते हो. डेंड्राइड का क्या फंक्शन होता है? जो भी सिग्नल्स है वो बाहर से अंदर लाना. ठीक है, स्टिम्युलाई करना. ये बाहर जो भी सिग्नल्स होते हैं वो अंदर लाता है. कौन? डेंड्राइड. डेंड्राइड इट ट्रांसमिट्स द सिग्नल इन द सेल. देन यू हैव द एक्सॉन. एक्सॉन, ठीक है, you can see here axon, and the main function of the axon is to transmit the signals from the cell body to the this your nerve ending. ठीक है, जो भी सिग्नल्स आपके इसमें होते हैं, आपके डेंड्राइड सेल बॉडी में होते हैं, उसको A पार्ट से B पार्ट तक कौन ट्रांसफर करता है? एक्सॉन. इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड ये जब बीच में देख रहे हो, इट्स द myelin sheet. ओके, Then you have your nerve endings. अब nerve endings क्या होता है? जो भी signals part A से part B में जाते हैं through my axon, वो आगे भी तो cells में जाएंगे ना. तो कैसे जाएंगे? Through my nerve endings. Clear? So the main parts of the nervous tissue are dendrites, axon, cell body, soma या cyton, nerve endings. Nerve endings. ठीक है, detailed explanation को देखते हैं ध्यान से. Dendrites are the thread-like structure that transfer signal from outside to inside the cell. Outside of the cells, inside of the cell में कौन signals transmit करता है? Your dendrites. ठीक है, देखो, सेल बॉडी, सोमा या साइटोन क्या है? इट इज द एरिया जहां आपके सिग्नल्स कलेक्ट होते हैं. वेयर द सिग्नल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स दे आर कलेक्टेड इन द सेल बॉडी. So your signals that come from outside, they all are collected in the cell body cyton. Okay, and they are further transmitted in the axon. Okay, so it is the area where all signals they are collected and they further transfer to the axon.
Now what happens is the axon, it's a long connecting structure which transfers the signal from the cell body to the nerve endings. बीच में पढ़ा था ना? It's सी ये बीच में कनेक्टिंग टिश्यू है जो कनेक्ट करता है आपके सेल बॉडी को एंड आपके नर्व एंडिंग्स को, which transfers the signal from the cell body to the nerve endings. The nerve endings are the branches from where one signal of one neuron, एक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, किसके थ्रू? नर्व एंडिंग्स के थ्रू. इट ट्रांसफर्स टू द अदर न्यूरॉन. ठीक है, हमेशा आपके इधर से एक न्यू न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ आपका डेंड्राइट्स आ जाएगा और एक न्यू न्यूरॉन आ जाएगा. तो यहाँ पे जो सिग्नल पूरा ट्रांसमिट हुआ, यहाँ से घुस के यहाँ पूरा नर्व एंडिंग से आगे ट्रांसफर हो जाता है डेंड्राइट में. क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? फाइन. Yeah, there was some disturbance in between. Don't mind. Okay, so this is how signals are transmitted from one neuron to the other. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ऐसे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं. You understood how? आपके पहले डेंड्राइट में आए सिग्नल्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी में आए, सेल बॉडी से एक्सॉन में आए, एक्सॉन कनेक्ट करता है किसको? सेल बॉडी और नर्व एंडिंग को. फिर सारे सिग्नल्स नर्व एंडिंग में गए, नर्व एंडिंग कनेक्टेड होती है आगे न्यूरॉन से, फिर वहां से नर्व एंडिंग से सिग्नल आगे डेंड्राइट में जाता है एंड पूरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है. तो ऐसे आपके पूरे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं. अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की. बहुत सिंपल है ना? कनेक्टिव नाम से पता चल रहा है कुछ दो चीजों को कनेक्ट करता है ना? किसको कनेक्ट करता है? दो टिश्यूज को कनेक्ट करता है. एक टिश्यू दो टिश्यू को कनेक्ट करता है, या यू कैन से कि एक टिश्यू दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है ना? So, as the name suggests, the connective tissue performs the function of connection between two tissues. है ना? किसी भी दो टिश्यू के बीच में कनेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है. So, the connective tissue are the tissue which connect to different same tissue. ठीक है? Like tendons जो है वो आपके बोन से मसल को ज्वाइन करते हैं, लिगामेंट्स आपके बोन टू बोन ज्वाइन करते हैं, ब्लड पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करता है, इट ट्रांसफर्स ऑक्सीजन एंड ऑल दैट जो हम पढ़ेंगे. सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. देयर आर सो मेनी, यू कैन सी, है ना? वी गोना स्टडी दिस ऑल. Blood, so these all are the types of the connective tissue. You have blood, you have lymph, you have bones, cartilage, tendon, ligament, adipose, areolar tissue. ठीक है? So ये सारे आपके connective tissue हैं. Blood, you all know blood, it's the red fluid that flows throughout your body. ठीक है? Lymph, it is a white colorless liquid that flows throughout your body. अब lymph में क्या होता है? आपके mostly leukocytes होते हैं उसके अंदर, leukocytes और WBCs. Okay? Then I talk about bones. Bones हमको पता है, so hard structure, है ना? Right? Okay. So जो आपकी bones होती हैं, right? जो bones है ना, bones बहुत hard structure होती है. Main क्या function होता है bones का? या आपकी body को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. फिर आती है आपकी कार्टिलेज, राइट? टेंडन्स जो ज्वाइन करते हैं मसल टू बोन, लिगामेंट्स जॉइंस बोन टू बोन, एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू जो इंसुलेटर भी एक्ट करता है, एरियोलार जो एयर के स्पेसेस फिल करता है. बात करते हैं ब्लड की. या सो ब्लड is the fluid that connects. Blood is a fluid connective tissue that runs throughout the body. ठीक है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरी बॉडी में आपका रन होता है, भागता नहीं है, it flows throughout your body. Then blood is a red in color because it contains HB. What is HB? Hint. I don't have any hint for this. Okay, red in color. Hemoglobin. What is HB? Hemoglobin की short form. ठीक है? Blood is red in color. क्यों होता है ब्लड रेड इन कलर? बिकॉज उसमें हेमोग्लोबिन होता है. बिकॉज ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है जो उसको प्रोवाइड करता है रेड कलर, एंड आयरन भी होता है, राइट? सो ब्लड में क्या क्या होता है? व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द ब्लड आपको पता है. एरिथ्रोसाइट्स that are also known as RBCs, leukocytes,
that are also known as WBCs, and thrombocytes that are also known as platelets. And yes, the main fluid, plasma. Plasma क्या होता है? It's a yellow fluid liquid in which all your cells float. एक liquid होता है आपके blood में जिसमें सारे cells float करते हैं, ठीक है. एंड एवरीवन इन दिस कोरोना टाइम ना, अभी कोविड में यूजुअली लोगों के प्लाज्मा, दे आर आस्किंग फॉर द प्लाज्मा ऑफ द पीपल, ठीक है. दे आर आस्किंग फॉर द प्लाज्मा इन एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कोविड ना, दे रिक्वायर प्लाज्मा. You have to tell me why. Okay, you have to tell me why do the COVID patients require plasma? You know, more of plasma. अब बात करते हैं, that's your homework question. Now let's talk about lymph. Lymph क्या होता है? Lymph is a colorless liquid that flows throughout the body. पता है आपको, है ना? It mainly consists of leukocytes. Leukocytes, what are leukocytes? WBCs, ठीक है. एंड यहाँ मैंने तो फंक्शंस बताए नहीं. यू ऑल नो रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स जो होते हैं और एरिथ्रोसाइट्स, इनका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना. ल्यूकोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी में डिफेंस, इम्यून सिस्टम बढ़ाना. आपकी बॉडी को भी जो भी डिफेंस करता है वो आपका ल्यूकोसाइट होता है. थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आते हैं. जब भी आपका कोई वुंड होता है उसको क्लॉट करने के लिए थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ठीक है. एंड लिव इट्स अ कलरलेस लिक्विड जिसमें मेनली ल्यूकोसाइट्स होते हैं. अब आते हैं बोन्स पे. बोन्स क्या होता है एवरीवन? बोन इज अ वेरी हार्ड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होता है, ऑब्वियसली आई कैन नॉट बेंड माय बोन, इट्स गोना क्रैक. Having a matrix of phosphorus and calcium. So आपकी जो बोन है वो एक बहुत हार्ड नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिसका जो मैट्रिक्स है वो है फॉस्फोरस एंड कैल्शियम. बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका बोन है उसका मैट्रिक्स किससे बना है? फॉस्फोरस से बना है एंड कैल्शियम से बना है. The matrix of the bone consists of the phosphorus and the calcium. ठीक है. This is a whole skeletal system. What's the main function of the bone? To provide the structure of your body. Without bones, you won't have any structure, right? You would be just a muscular organ. So, bones are very important because they provide the structure. अब बात आती है कार्टिलेज की. कार्टिलेज क्या होता है? What is cartilage? कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, यूजुअली बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है ताकि फ्रिक्शन होता है ना, बोन्स दे हैव टू मूव. अब दो बोन्स के बीच में इट इज प्रेजेंट सो दैट फ्रिक्शन होके बोन्स में कोई इंजरी ना आए, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ मेरी 1 बोन है एंड यहाँ भी मेरी 1 बोन है. जब फ्रिक्शन होता है, जब मूवमेंट होती है बॉडी में, तो एक डर होता है ना कि अगर एक क्लैश होगी तो हमारी बोन्स तो टूट जाएंगी, इंजरी हो जाएगी. अब इस क्लैशिंग को रोकने वाला बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है जिसको आप कहते हो कार्टिलेज. कार्टिलेज आपकी 2 बोन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है ताकि आपकी 2 बोन्स क्लैश ना हो एंड आपको कोई भी इंजरी ना हो. If you see here at the knuckles, this is 1 bone and this is 1 bone. इसके बीच में you have a organ, ठीक है. यहाँ जो आपकी knuckles है, they all are made up of cartilage, so that आपकी ये वाली जो bone है, it does not clash with this bone, ठीक है. Now they are present as shock absorber. जैसे मैंने भी आपको बताया, ये shock absorber का काम करते हैं, दोनों में कोई इंजरी ना हो bones में. They also form the organs like ears, nose, etc. आपको पता है, right? I can bend my ear, I can bend my nose. अब बात आती है टेंडन की. टेंडन क्या होता है? टेंडन वो टिश्यू होता है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है. Am I right, everyone? टेंडन्स वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं. Tendons are non-elastic. आप tendons को move नहीं कर सकते हो because they're non-elastic. First of all, you all know what are tendons. Tendons are the ones which connect the muscles to the bones, and now they're non-elastic. Why non-elastic? Because अगर tendons elastic होंगे, वो ज्यादा पुल होंगे तो आपकी muscles जो है उसमें strain भी तो आ सकता है, right? Strain, right? Yellow collagen fiber.
ठीक है, ये येलो कोलेजन फाइबर से बना होता है. किससे? येलो कोलेजन फाइबर. एंड इट इज नॉन इलास्टिक. नॉन इलास्टिक, ये फ्लेक्सिबल नहीं है. बात करूं मैं लिगामेंट्स की, सो लिगामेंट्स आर द वन व्हिच कनेक्ट बोन टू बोन. टू बोन्स को कनेक्ट करने वाला ligament tissue. Okay, ligaments are highly elastic. Ligaments highly elastic होते हैं. They are white as well as yellow in color. हाँ, they are white as well as they have yellow collagen fibers. ठीक है, ये white भी होते हैं, इनमें yellow collagen fibers भी होता है. And आपको ये point बहुत it's very important to remember that ligaments are highly elastic and your tendons, they are non-elastic. बात आती है एडिपोज टिश्यू की. एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू है द फैट टिश्यू. जो भी आपकी बॉडी में फैट होता है ना, दैट्स ऑल स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू. ठीक है, it stores fats in the body, like it acts as an insulator in the cold weather. Like अब मैं बात करूं पोलर बियर्स की. जो पोलर बियर्स होते हैं ना, उनके वहां पे उनकी एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है. पोलर बियर की येलो कलर की उनकी एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है जो उनको बाहर के हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, उनमें क्यूटेनियस लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की, जो उनको अंदर से वार्म रखती है. ठीक है, एडिपोज का समझ आया? इट स्टोर्स फैट इन योर बॉडी एंड कोल्ड वेदर से इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है. अब बात आती है एरियोलार टिश्यू की. एरियोलार टिश्यू क्या होता है? एरियोलार टिश्यू इज अ ह्यूज टिश्यू ऑफ मेनी स्पेसेस. एयर से भरा होता है ये टिश्यू. इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल. जो एरिया आपकी मसल्स और स्किन के बीच वाला होता है, उसको पूरा एरियोलार टिश्यू फिल करता है. बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर एरियोलार टिश्यू होता है, राइट? एंड ऑल अराउंड द blood vessels के all around. Clear everyone? And now is the homework time. You have to tell me why are tendon non-flexible whereas ligaments are highly flexible. वैसे मैंने आपको बता दिया है, but still you have to tell me the answer. And there was one more question. Add one more question to your homework. ठीक है, and what's the question? The question is, why is plasma required for COVID patients? You have to tell me, right? You have to tell me that first of all, why tendons are non-flexible whereas ligaments are highly flexible. And आपको मुझे ये भी बताना है कि plasma क्यों रिक्वायर होता है कोविड पेशेंट्स के लिए. Am I clear with this, everyone? Take the screenshot of the question and write the answers in the comment section. I'm waiting for the answers, and those who will answer, they will get the chance. Their name would reflect on my screen, and that's a good thing. And yes, thank you everyone for watching this video. Tomorrow or I don't know whenever I'll post a video, it would be on plant tissue. Some plant tissues I'll describe. Till the time, what do you have to do? You have to do the homework question and you have to revise the topic. You have to share this video with your friends, relatives, etc. Right? So thank you everybody. I'll meet you in my next video. Till everyone, take care and bye bye.